Hello bachcho, let's read this question. The figure shows three equidistant slits being illuminated by a monochromatic parallel beam of light. Let BP naught minus AP naught is equal to lambda by 3 and D is greater than lambda. So there are two bits to the question. The first bit says show that in this case D is equal to 2 lambda D by 3. तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा. हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है bp नॉट माइनस AP नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3. इसको एक्सपैंड करके देखते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bp नॉट. लेट्स कनेक्ट b टू p नॉट. एज यू कैन सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये जो हमारा राइट एंगल है इधर, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे हमारा bp नॉट का वैल्यू आ जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर d स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, so small d square. So we have अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर माइनस AP नॉट का वैल्यू हमारा डायरेक्टली कैपिटल डी हो जाता है इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. ये d को हम दूसरे साइड ले जाके स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं. तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 9 माइनस प्लस कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा बाई 3 टाइम्स कैपिटल डी. ठीक है. अब जैसे हम देख सकते हैं ये कैपिटल डी स्क्वायर है यहाँ पे और लैम्डा स्क्वायर बाय 9 है. तो लैम्डा स्क्वायर इन कंपैरिजन टू कैपिटल डी स्क्वायर इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, सो वी कैन इग्नोर दिस एंड इक्वेट इट टू ऑलमोस्ट जीरो. और ये अब सॉल्व करते हुए हमारा जो कैपिटल डी स्क्वायर है दोनों साइड में वो कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई 3. तो इसका माइनस जो है हमारा प्लस हो जाएगा एंड देन वी कैन हैव d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा कैपिटल D बाई 3. दिस इज व्हाट देयर आस्क्ड अस टू शो. तो ये हो गया हमारा a bit. Now they're asking show that the intensity at P naught is three times the intensity due to the any of the slits individually. तो हम ले लेते हैं at any slit the amplitude is going to be constant and let it be a. ठीक है. तो अब हम पहले CP नॉट माइनस AP नॉट और द फेज लेंथ डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड A कैलकुलेट कर लेते हैं. सो वी नीड टू फाइंड आउट CP नॉट माइनस AP नॉट. तो ये हमारा हो जाएगा CP नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल d स्क्वायर विच सॉरी माइनस कैपिटल D. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये d का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इधर, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हुए वी हैव अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा कैपिटल D बाई 3 माइनस स्मॉल d. इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर कॉमन लेते हुए स्मॉल d विल कम आउटसाइड 1 प्लस 8 लैम्डा बाई 3d पावर 1 बाई 2 माइनस स्मॉल d. इसका हम बाइनॉमियल एक्सपेंशन लेंगे तो हमें मिल जाएगा d टाइम्स 1 प्लस 8 lambda by 3d into 1 by 2. The other terms can be ignored because they are very small as compared to this. So minus capital D. इसको जब हम expand करेंगे so we will get d 8 and 2 can be cancelled. We will get 4 here. So we will have d plus 4 lambda by 3 जो हमारा d यहाँ पे और यहाँ पे वो cancel हो जाएगा minus d. तो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव द लेंथ डिफरेंस एज 4 लैम्डा बाई 3. नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन B and A is going to be equal to 2 pi length difference x by lambda. So the length difference we have been given directly as lambda by 3, so we can substitute that. We have 2 pi lambda
by 3. Alright, so ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ एंड देन जो हमारा phase difference between C and A is going to be equal to 2 pi x by lambda, which is going to be equal to 2 pi into 4 lambda by 3 divided by lambda. ये lambda यहाँ पे cancel हो जाएगा, so we have 2 pi by 3. So here also the lambda gets cancelled. We have a total of 8 pi by 3, which can be written as 2 pi plus 2 pi by 3. So this, since the phase difference of 2 pi makes zero effect, so we have the net phase difference is equal to 2 pi by 3, which is the same as BA. Alright. Now to calculate the intensity, we know that the intensity is proportional to amplitude square, and the net amplitude can be calculating using vector sum. So since the phase difference between CA and BA is same, we can take this to be a common point and we can calculate using that. So we have R is equal to whole under root of 2 times R small r whole square, where R is the amplitude at each of C and B, plus R square, which is the amplitude at A, minus plus 2 into 2 into 2r times cos of the angle between them, which is given as 2 pi by 3. Alright, so इसको हम expand करते हैं, so we will have 4r square plus r square plus 4r square into minus 1 by 2. Alright, so 2 and 2 gets cancelled. We have a 2 over here, and this is a negative sign, so we have a total of root 3 times r. Now this is the resultant amplitude at P naught. So the intensity is equal to K times the amplitude square. So intensity individually divided by the intensity net divided by the intensity individually is going to be equal to K times A square. A square here is going to be root 3r. So 3r square divided by K times just r square. So cancelling out common terms, we have I net is equal to I net is equal to 3 times the I individual. So that is what they are asking in the B bit. So we have proved that as well. So I hope you have understood how I have solved this question. Thank you so much.